वुड यू सजेस्ट कि एकेडमिक्स को छोड़ के अदर से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी चाहिए एक स्टूडेंट को? यू आर नॉट अ रोबोट, राइट? तुम्हें क्यों हायर कर रहे? तो एआई को भी हायर कर देता। तो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। सो टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एवरी बिट ऑफ इट इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ योर एंटायर लर्निंग। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डिफरेंट क्या कर सकता है लाइक अपने बैचमेट से? क्योंकि सारे लोग तो शॉर्टलिस्ट होने से नहीं रहे, ठीक है? इनको डिफरेंट करने के लिए पहले बेस होना चाहिए। अगर तुम्हारा बेस ही इतना छोटा है, तुम तुम 10th फ्लोर के बाद तुम बना नहीं पाओगे तुम्हारा बिल्डिंग। दैट इज द पॉइंट। अब एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को क्या एडवाइस दोगे? आपसे बेटर या फिर आपके जितनी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाए वो? फर्स्ट वुड ऑफ कोर्स क्लियर द Hello everybody, I am Jay Soni and today's video is going to be super valuable for those students who really want to build a strong career in tech. You know, most of the students entered college with a big dream, but very few of them can figure out what actually they should do. Like किसी को internship करनी है, किसी को startup करना है, किसी को competitively compete करना है, and another things. Today's guest is someone who have done these things. Before many of the college students even think seriously about coding, he has already started learning coding and build real skills. So today's guest is Suras is a third year student at Scale Up School of Technology, and also he has interned at three companies, Dukan, Emergent, and a Singapore-based company. He has got offer from Singapore-based company in just second year of his college, in which he has got highest stipend ever in the campus. So today we are going to figure out what happens behind the scenes. So let's dive into the conversation. वेलकम टू द चैनल। आई हैव सीन योर लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था टेक जर्नी में कि आपने इंटर्नशिप की, यहाँ कुछ छोड़ा, यहाँ आकर क्रैक किया और सिंगापुर इंटर्नशिप क्रैक की। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। लाइफ में अनसर्टेनिटी मेसी थिंग्स होती है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन दैट मेसी थिंग्स भी बताओ, अनसर्टेन थिंग्स भी बताओ, लाइक इनसाइट्स आपके बताओ। ओके। सो हाय गाइस, आई एम स्वराशीष एंड मैंने कोडिंग चालू किया था आई थिंक क्लास 10 के आसपास। आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट बैक देन। मेरे को कोडिंग अच्छा लगा था, आई स्टार्टेड कोडिंग। I failed to go to Russia in one hackathon. I failed lot of hackathons 12th के बीच में। I gave lot of hackathons, lot of competitions and whatever. And then finally, right now, I have done kind of 2 to 3 internships and all. This entire phase of failures is made me right now who I am. तो आपने टोटल कितनी इंटर्नशिप्स क्रैक की? 3. फर्स्ट दुबका, देन इमर्जेंट, Yes. देन सिंगापुर बेस्ड हाँ, न्यूरोस। yes. ओके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टूडेंट जो टेक के अंदर आते हैं कि टेक के अंदर ये होगा, वो होगा, लाइक इनसाइट्स बताओ टेक के अंदर? I mean, honestly speaking, लोगों के concepts clear नहीं होते. What do we work in a software and everything. Like starting में everyone does maybe some language, Python हो गया, Java हो गया, whatever. They start learning while loop, for loop, a little bit of DSA. Then they think कि ये कहाँ काम में आएगा and everything. But actually, it ultimately the logic when we are thinking like that, that actually comes into play when we properly optimizing things inside the apps. तब वो लॉजिक बिल्डिंग काम आता है, तो पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो आई थिंक दैट इज वन मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव कि यार ये यूज कर, ये कहाँ ही लगेगा वाला सीन। तो आपने स्केलर जॉइन किया तो आपका टेक बैकग्राउंड था पहले से? मतलब उतना कुछ नहीं, आई जस्ट स्टार्टेड कोडिंग एंड दैट्स इट। लाइक एट दैट टाइम यू वर यू एबल टू बिल्ड समथिंग? हाँ, मतलब बहुत ही वेरी लो लेवल, छोटा मोटा ऐसा, बहुत बड़ा चीज नहीं, पर हाँ, आई हैव बिल्ड वन और टू थिंग्स। कोडिंग कब से स्टार्ट किया आपने स्कूल लाइफ में? क्लास 10, कोरोना, दैट टाइम आई वाज सिटिंग एट होम। स्कूल वगैरह तो सब बंद थे एंड सो आई थॉट कि व्हाई नॉट गिव दिस अ ट्राई। फर्स्ट इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि हाउ डिड यू गॉट शॉर्टलिस्टेड एंड व्हाट वाज द क्राइटेरिया? So I think that was the end of first year or something like that. Dukan came into our college and they were hiring interns. And so they gave us an assignment. कुछ तो एक AI bot type का कुछ बनाना था. And then they selected I think 15 to 20 people from the entire batch. And that was the first company that came to hire from Scalar itself. So college से ही आया था. And then we directly got selected and I worked there for 2 months, 2-3 months, and stipend उस टाइम कुछ 20K के आसपास था. But yeah, it was a nice experience. सेकंड इंटर्नशिप थी आपकी इमर्जेंट, Yes. तो उसके बारे में बताओ कि व्हाट वाज द क्राइटेरिया?
So Emergent was actually hiring again from, that was also from SST itself. I think हम लोग total 4 rounds of interviews दिए थे for Emergent, and that was actually kind of founding intern, like very less. I think Emergent at that time had 6 to 7 people in their team. Okay. So that was a big deal for them also. So they after 4 rounds of interviews, they finally hired me. व्हाट वाज़ द मेन टास्क इन सिलेक्शन? लाइक आपने कुछ बिल्ड करने को दिया था आपको? And so the online assessment mein, that was more of a DSA centric thing. And then when we went for interviews, it was completely different scenario. Of course, in one round, we had to, like, in that place itself, we had to build some JSON parser, and then uh, काफी different, like, I think they covered 4 verticals in 4 interviews. So एक one was like high end, like it was a development based question which you need to solve using DSA as a type of question. Okay. So it was a very interesting interview overall. तो सब मिला के it was a very like different thing altogether. इंटर्नशिप में आपका जॉब रोल क्या था? उनका again Emergent is working on building production ready apps from AI, right? Okay. So I was helping them evaluate, I was helping them building tools for their AI. So that was mostly the genre, like AI centric space. And third internship was Singapore based. Yes. Okay. How did you got it? It was again an on campus thing. So Neurovisor was hiring from Scalar itself, and the process was simple. Like, first of all, we need to give uh, an online assessment. Again, online assessment had backend development questions, and also DSA and some MCQs, and like it was a mixed machine coding round plus DSA plus everything. So, and then they, from I think 100 to 150 applicants, they selected 9 people for interviews. 100 to 50. 100 to 150. I think the total count was something 100 to 100. 210. All around country. No. It was a on-campus hiring. Okay. So from our batch, like most of them applied because of course it's an attractive opportunity. But then from like that pool, I think they selected 9 for interviews. We had one round of technical interviews, and it was mostly again it was purely a backend role. So the question were mostly on DSA and backend itself. So it was it, and then finally they selected 2 people. And you got highest stipend. The thing is, we were staying at Singapore, right? So in that way, the stipend was, I won't say that it was like very less. We were able to sustain properly, and it was, we didn't have to put some money from our pocket. As simple as that. And we had fun. We also went to Malaysia and Bali for like going, I see, like to visit. But you have created an image of Scalar, like, yeah, like I agree to that, but then it was a very like interesting opportunity going abroad and meeting with new people. So it was interesting experience, to be very honest. Okay. तो जॉब रोल क्या था सिंगापुर बेस्ड? Back-end intern. We actually researched for 5 to 6 years and built our entire test. That was their research product, and then they use software to ship it. And they had very like big clients, small to big clients, and so I was also a part of their engineering team, and I was maintaining their softwares. तो स्टाइपेंड वाज 2 लाख अप्रॉक्स. Yeah, like Indian money में 2 lakh it was. ओके, तो आप कितना सेव कर पाते थे उसमें से लाइक? Yeah, देख honestly speaking, जितना मैंने सेव किया था उस टाइम, सिंगापुर का कॉस्ट छोड़ के, आई थिंक आई सेव्ड अराउंड 1 lakh के आसपास. बट देन दैट मनी आई यूज टू गो टू मलेशिया एंड बाली. सो टेक्निकली नो सेविंग्स, बट सिंगापुर में मतलब अलग से आई हैड 1 lakh or something. टियर 3 कॉलेज वाले सारे बच्चे नहीं कर पाते ये चीज़ें. DNOL में मेरे दोस्त है, उनसे बात होता है. उनका करिकुलम इतना लाइक फालतू चीज से भरा हुआ है, उनको ये सब अलग से पढ़ना पड़ता है. टीयर 3 का तो मैं छोड़ दिया हूँ. ठीक है, ऐसे कॉलेजेस का ये हाल है. तो आई थिंक उस हिसाब से तो आई थिंक लाइक व्हाट स्केलर डज इज फैंटास्टिक. तो आपने एक एवरेज स्टूडेंट से हट के आपने क्या किया जो कि आपने इतनी अच्छी इंटर्नशिप क्रैक की? He was interested in computer programming, right? Trying to create a separate barrier, like
एक्स फैक्टर फॉर देमसेल्फ, पर्सनल टच, द एक्स फैक्टर, या तो कोई कॉम्पिटिशन वगैरह जीता, या तो हैकाथॉन्स में बहुत अच्छे किए, या फिर कोई बहुत यूनिक आइडिया पे प्रोजेक्ट बनाया, या फिर बहुत ही डीप टेक प्रोजेक्ट बनाया, लाइक समथिंग एक्स फैक्टर। तो आई थिंक मेरे लिए वो एक्स फैक्टर ऑफ कोर्स came from ICPC also, like the whole entire competitive programming profile। तो ये तो आया था। एंड द सेकंड थिंग आई ऑलवेज लाइक डीप डाउन ऑन इज लाइक conceptual clarity and base understanding। So I think this is a very underrated thing which like many very less people think about, but actually being able to learn quickly helps you actually a lot whenever you like go anywhere। So like for instance मेरे internships में मेरे last जो न्यूरोवाइजर में था, तो they were using Scala, right? And I never coded in Scala, but it was okay। Why? Because I learned it, because when you learn one language and you know the actual stuffs, then it's very easier for you to switch if you have your basics clear, of course। correct. Logics बन Exactly। तो it was very easy for me to switch। तो मैंने उधर 3 महीना काम किया, आई कोडेड इन स्काला, बट देन दैट वाज द पॉइंट। अब एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को क्या एडवाइस दोगे? आपसे बेटर या फिर आपके जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब कर पाए वो? फर्स्ट वुड बी ऑफ कोर्स क्लियर द बेसिक्स, लाइक people can have impressive resumes, but then interviews में जाके people cannot answer, right? Explore, explore if you like competitive programming, go for it, and just try a little bit and then figure out, don't figure out by listening to others, go try out a little bit, because you have your time in your first year to try out things, so go out, try out। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डिफरेंट क्या कर सकता है लाइक अपने बैचमेट से? क्योंकि सारे लोग तो शॉर्टलिस्ट होने से नहीं रहे, ठीक है? तुमको डिफरेंट करने के लिए पहले बेस होना चाहिए। अगर तुम्हारा बेस ही इतना छोटा है, तुम तुम 10th फ्लोर के बाद तुम बना नहीं पाओगे तुम्हारा बिल्डिंग, दैट इज द पॉइंट। तो फर्स्ट ईयर में अगर तुमने अपना बेस सॉलिड नहीं किया, you will have your own preferences, but then you need to be agnostic। So that is kind of the point। So if you have tried multiple things, maybe चलो तुमको फ्रंट एंड अच्छा नहीं लगता है, but you need to have that थोड़ा सा knowledge, थोड़ा सा idea about front end, because when you are going into a system, if you don't know how the front end will process your data, how can you be a good back end engineer? So that's kind of the process of it। So that's the main motive of being in a first year, that you need to clear out the basics and you need to strengthen your base, and you need to, you can say that, fill your bag with multiple things, so that you can understand which is your power thing, which is your power, you need to understand that। आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन-सा था इन इंटर्नशिप्स में जो आपने गेन किया लाइक जो आप थ्योरी फंडामेंटल से गेन नहीं कर पाते? ऑब्वियसली लाइक टीम में काम करते हो एक्सपीरियंस गेन होता है इंडस्ट्री रेलेवेंट चीज़ें पता लगती है। तो उसके अलावा आपने क्या चीज़ें लाइक एक्सपीरियंस गेन किया? Now, honestly speaking, when you code in your project, right, then that is actually different from what you go and write there in the companies, because they care about security, they care about how you write your code, they care about following all the solid principles or not, right? So they care about every of these things। First of all, you need to take the repo and you need to understand how they have written the code। So that's kind of the friction, that's kind of the understanding that you need। तो वो काफ़ी अलग एक एक्सपीरियंस रहता है टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट। एंड स्पेशली मैं, आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन स्टार्टअप्स, राइट? सो स्टार्टअप्स में even they have also done many things wrong in their code base, right? And so that's kind of also a learning। आपको क्या लगता है कि कितनी मिस्टेक्स आपने की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड होने को आया अभी? तो इंक्लूडिंग इंटर्नशिप्स एंड एकेडमिक्स जो कि आप अवॉइड कर सकते थे? काफ़ी, बिकॉज बहुत टाइम जैसे मैं इंटर्नशिप से बिजी रहता था, तो मे बी जो कोर्सेज वगैरह चलते थे, या फिर मेरा खुद का लर्निंग्स नहीं हो पाता था, दैट कैन ऑल्सो बी अ थिंग, राइट? उसके बाद मे बी देयर कैन बी अ थिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, जब पे मे बी आई कुड हैव स्कोर्ड मोर इन मे बी ICPCs एंड एवरीथिंग। लाइक वुड यू सजेस्ट कि एकेडमिक्स को छोड़ के अदर से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करनी चाहिए एक स्टूडेंट को? लाइक इन स्केलर पर्टिकुलरली? There are two types of people। One who is scared कि अच्छा, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें कर लूँगा, I won't be able to complete, and also मेरा academics खराब हो जाएगा।
मैनेजमेंट तुम्हें सीखना ही है अल्टीमेटली. You will have a lot in your plate. So it's better to start filling your plate. ठीक है. तो जब तक तुम्हारा प्लेट में उतना चीजें नहीं आएगा, you won't learn how to do it. You can make mistakes, you can fumble, it's fine. Like you need to do it because अभी नहीं सीखोगे, अभी नहीं मिस्टेक्स करोगे तो when will you do that? So time management, stress management, every bit of it is kind of a part of your entire learning. So you are not a robot, right? Correct. तो अब तुम्हें क्यों हायर कर रहे, तो एआई को भी हायर कर लेता. तो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग. आई थिंक पीपल शुड एक्सप्लोर इन देयर फर्स्ट ईयर. आपका जो बैच है वो बहुत क्रेज़ी कर रहा है हर चीज़, मतलब इंटर्नशिप है, किसी कोई कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, कोई आईसीपी को कॉम्पिटिटिवली कम्पीट कर रहा है। इनको कैसे देखते हो, लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और कनेक्शन, मोर कनेक्शन? I'm motivated people like this who are talking about startups, who are talking about internships from the first year in itself. ऐसा नहीं कि फोर्थ ईयर में सोचेंगे चल थोड़ा सा खा के आते. Not like this. So that I think actually helped me a lot, and that's I think one of the best things here at SST. 5 बंदे कोई साइड में बैठ के कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी इंटरेस्ट होगा कि मैं भी Exactly. ग्रो करूँ उनके साथ। Like in startups, in I would say कि juniors are doing better than us, and of course they have the liberty, they have the time to do it and whatever. But then ultimately they are doing better than us. So I think the entire thing, not even our batch, like the entire SST ecosystem. Even if I talk about first year, right? One people got into Anthropic. I mean, crazy. So that's kind of the point in itself. It's not only about the seniors, it's about the entire college, and I think that's one of the best things about SST. आपका भी स्टार्टअप है वैसे, डेल्टा एजुकेशन, हाँ, यस. तो उसके बारे में बताओ, लाइक कहाँ से आइडिया आया? मेरा एक दोस्त है श्रीमय, उसका यूट्यूब चैनल है एज इफ वी ऑल नो. तो श्रीमय का एक कम्युनिटी था जहाँ पे हम भी लाइक वी वर आल्सो हेल्पिंग पीपल आउट कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता था बिकॉज आफ्टर फर्स्ट ईयर व्हेन वी केम फर्स्ट ईयर में, उसके बाद दैट वाज द सेकंड बैच जहाँ पे लोग आ रहे थे. तो बहुत कंफ्यूजन था कैसे चलता है क्या होता है. मेनी पीपल डिड नॉट नो. राइट नाउ बहुत लोग जानते हैं स्केलर को थैंक्स टू स्केलर का मार्केटिंग. पर द पॉइंट इज बहुत लोग जानते हैं स्केलर को राइट नाउ, बट दैट टाइम ज़्यादा डिटेल्स था ही नहीं लोगों के पास. एंड सो दैट्स व्हाई दे केम टू आवर कम्युनिटी. दे ऑलवेज हैड अ टॉक विद अस. बहुत ही engaging community that that time I think 200 to 300 people were in it, and we 5 to 10 people were helping the students out, right? That was kind of the motivation behind Delta. And that's why we stopped thinking and we said ki at least let's do this, let's do one thing so that people can, like, students can get help and it means something to some customers out there. So I think that's, आपका रोल क्या है डेल्टा एजुकेशन के अंदर? see, very messy, ठीक है, honestly speaking, because normally we don't have that much of time to invest into. We are 5 people who are there in Delta right now, and we do it kind of all. I personally do it all because I teach maths there, and I also try to see a little bit of marketing and everything, like kind of jack of all trades thing. Um, and like Shimai and all, they are morely focused into marketing, in case and everyone. So that is kind of more into acad. I try to be a jack of all trades and manage everything. व्हाट डू पीपल थिंक्स, लाइक डेल्टा एजुकेशन को कहाँ तक लेके जाना है? I won't say कि this will be my next best startup or whatever. Okay. ठीक है. It can be. I don't know right now. It can be. But my point is, when I started this, my thought was कि if I do not start something, I will never learn anything. Correct. Right. So I'm not saying that this will be the next best startup who will get into YC. But my what my plan was, I need to learn how to manage things. I need to learn to bring real customers. I need to see how real money comes and where we can do better. So these were all the learnings that I wanted, and that's why I started Delta. एनसेट की प्रिपरेशन कैसे की और स्केलर में सेलेक्ट कैसे हुए? व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ एनसेट? When we got selected, they had only a batch of 200 students, and they asked four things.
maths and like LR, English, and learnability. So in my time, I never prepared properly for NSET. So I was preparing for my ISEL admissions, right? And I saw Scalar, and I liked the curriculum. I liked the people and everything. So I thought, why not apply? And I applied and I gave the NSET. After that, I got selected somehow, and there were two rounds of interviews. One was taken by Shit sir and one was taken by Bhavik sir. That interviews also uh, kind of compelled me to join Scalar in itself, like kind of convinced me, right? What was the toughest part you have faced in NSET process? मेरे लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट हाँ, इट्स ए लर्नेबिलिटी व्हिच यू डोंट हैव राइट नाउ. But learnability was something completely new now, so it was kind of I'll say also tough. Yeah, so that was one thing. इसकी जगह सेकंड ऑप्शन रखा था कोई आपने या फिर स्केलर ही चूज़ किया डायरेक्टली? नहीं तो एक्चुअली मेरे पास आइजर्स का ऑप्शन था. मतलब आप एवरेज स्टूडेंट तो नहीं हो आप। मैं ऑनेस्टली बोल तो लाइक सबको लगता है कि हाँ, मेरे जितने होंगे लेकिन आपने बहुत कुछ छोड़ रखा है। I never wanted to join as a traditional college. I तो thought कि वो that time I think the IIT Madras degree came first, and मैंने क्लास 12 में उनका क्वालिफायर एग्जाम देके I cleared that. तो I thought कि मैं तो घर बैठ के यही कर रहा हूँ, बाकी मैं खुद से कर लूंगा, because I was also doing, but then I will do it in a proper way. Kind of my idea was more aligned to that. But then ISETs came, and then after that Scalar came. I think that's why I switched to Scalar, because I saw that what I exactly wanted to do, they were trying to help me with that. So I was like, why not? इन व्हाट वे डू यू फील स्केलर इज़ वर्थ? Primarily three reasons why I joined like Scalar. One was curriculum. Second was the teachers. If they are really gonna teach us, then why not? As simple as that. From Google, from Amazon, Atlassian, or and they did. लाइक आपका तो फर्स्ट बेस्ट था और Yes. स्केलर के मार्केटिंग से आपने कहीं न कहीं देखा होगा कि स्केलर एक करके नया स्कूल है, एक कॉलेज है। Of course, of course. तो आपको लगा कि ये स्कैम हो सकता है या फिर रिस्क ले ले लेते हैं? Of course, it was a risk. I won't say that it wasn't a risk, and I'm glad that my mom and dad also agreed to take the risk. But then it was a calculated risk. First of all, this was the first batch, right? But like that time, two things opened, right? Scalar and Newton opened. But I didn't have that much trust in Newton because I searched for it and I didn't get that level of trust. You will say that I resonated with Scalar more. बट व्हाट डिफरेंस डिड यू गेट दैट लाइक न्यूटन अच्छा नहीं है और स्केलर बेटर है उससे? लाइक स्केलर का मैंने एकेडमी स्टैट्स देखा, तो एकेडमी स्टैट्स बहुत अच्छा था, एंड मतलब न्यूटन का उतना नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम में, जितना मेरे को याद है, राइट? लोगों का क्रेडिबिलिटी, लाइक द टीचर्स, एंड उनका पुराने स्टैट्स का क्रेडिबिलिटी अ लिटिल बिट अबाउट देयर एकेडमी, बट देन स्टिल समथिंग इज देयर, राइट? समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आई थिंक ओवरऑल में आई वाइब विद स्केलर मोर. फियर आपको है अभी तक कोई अपने करियर के रिलेटेड? One of the things that I fear is becoming like not able to learn and becoming irrelevant, because the world is moving too fast, right? And that's why I also push myself to learn new things or whatever. I think that's one legit fear that I have. Fear maybe hona is does not make sense, because that's kind of drives you, right? It's like fear push karta hai. हाँ, exactly. So that's right now world is moving too fast. If you are not there for 2 months, you will lose out. So that's kind of the point. So I think that is one legit fear that I have, and I think it's good to have. सो लास्ट पार्ट है कन्वर्सेशन का कि व्हाट आर दोज़ पॉइंट दैट यू विल सजेस्ट स्टूडेंट टू नॉट जॉइन स्केलर? First of all, do not join Skiller if you think that you want to pursue something different than maybe a little bit of business or computer science, right? If you do want to think about different things, then do not लाइक स्केलर तो अभी एआई और बिजनेस भी लॉन्च कर रहा है। business or CS side, right? Other than that, please do not join Skiller, because it does not make sense to be in Skiller. स्केलर की फीस लाइक हाई है एक Yes. टियर 1 Yes. कॉलेज से भी। एवरेज मिडिल क्लास स्टूडेंट कैसे कवर कर सकता है उसको? कॉलेज खत्म होने से पहले ही इंटर्नशिप्स वगैरह में कवर कर लेगा या फिर विदिन 1 और 2 ईयर ऑफ प्लेसमेंट ही विल कवर दैट? Very generic way में speaking, तो 1 or 2 years I would say. Opportunities आते हैं बाहर के कॉलेज, तो बहुत ही कम opportunities आता है, इधर इतने startups आते हैं. So I think you can do that even like before graduating. You can get the ROI, but then
I think 1 or 2 years में तो you will get the ROI. तो एक कोई आप पाथ बता सकते हो लाइक एक किसी स्टूडेंट को अपने कॉलेज के अंदर ही कॉलेज की सारी फीस पे करनी है, तो वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता है? There are two ways. Yeah, so you can pick one language and you can start with exploring the language, and then you can start exploring what that language can do. With Python, if you're exploring, then maybe you can explore ML, right? Or another point which can be is that you start with an idea that I want to build this. Right now, AI systems are much more advanced, right? So you can use them. Build on it, build on it, and when building, you learn that process. Like try करना चाहिए हर चीज Exactly, like then you find your interest. exactly. हमारे बैच में अबाउट 6 to 700 स्टूडेंट्स है, ठीक है? तो हाउ कैन आई स्टैंड आउट इन दैट लाइक इन टॉप 100 और टॉप 50 सो दैट आई कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम देम? स्किल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग होता है ना. बिल्ड ऑन योर आइडिया. यू कैन बिल्ड सेपरेट प्रोजेक्ट्स विच आर एक्चुअली ग्रेट टू हैव. या तो इट्स यूनिक या फिर इट्स वेरी डीप टेक. वाइब कोडिंग से लाइक एक कंपटीशन बढ़ गया है इससे, लाइक ठीक है, चीज़ें फास्ट हो गई है, लर्निंग फास्ट हो गई है, तो उसे compete कैसे करें हम? एक लाइक स्टैंड आउट कैसे कैसे करें? नॉट इन कॉलेज, लाइक इन Anywhere, you need to understand how to use it. And for that, you need to have clarity about systems. That's what I was telling about fundamentals. अगर तेरे को नहीं पता है वेबसाइट में कहाँ चेंज होगा, what you will say is वाइब कोड, लाइक कोई भी क्लाउड कोड किसी को, what you will say is make this change. But what I would do is not that. Maybe I will tell specifically what to change. इधर का बटन जाके ये चेंज कर दो, इस पेज में होगा. ठीक है. एंड दैट इज द क्लैरिटी दैट यू नीड टू स्टैंड आउट. तो एक प्रोजेक्ट में भी 25 प्रॉम्प्ट से खत्म कर सकता है. यू नीड 25 प्रॉम्प्ट्स टू एंड इट. I can do it in less than, let's say, 5 prompts. The same project. 5 to 10 prompts. I completed it. Why? Not because कि तेरा AI better था, मेरा AI better था. Nothing. Same AI. Because like they do mistakes and I do understand that. Yeah, फिर they are taking some choices which I don't like. As simple as that. Like problem solver में बनना चाहिए. Exactly. That is your point. Okay. So that's all about our conversation. Thanks for joining. Yeah. So this is all about the conversation. And इस वीडियो में हमने बात की how we should figure out the strategic way so that a first year student can follow and consistently he got good opportunities. और actually skills opportunities में convert कैसे कर सकते हैं? What things actually matters in our projects and our skills. So this is all about today. मिलते हैं next video में. Till then, take care. Bye bye.